Hello everyone, welcome back to our channel. So here we are with another post-contest discussion or the video solutions basically of Starters 159, and you will be taking the division 4 of this contest. So let's start with the first question. It is ice cream and cone. Let's see what this question has. This question says that chef has X cones and Y scoops of ice cream, and each ice cream cone requires exactly one cone and one scoop of ice cream. Your task is to determine the maximum number of ice cream cones chef can make with the available ingredients. Okay. So in this question, basically you are given with two integers. Those are x and y. Okay. So basically either of them, like one of them is representing the number of scoops you have. Okay. And the other one is representing number of cones you have. Okay. It's like this is your cone and you have one scoop. Okay. Let's assume this is your scoop. So obviously scoop and cone both are required to make an ice cream, right? So if either of them gets exhausted, either the scoop or the cones, you cannot make an ice cream, right? So the maximum number of ice creams you can make is the minimum of both, right? The minimum of scoops and the minimum of cones. So basically you just have to print minimum of x comma y, right? So that was all for this thing. And this is the code for this. It is simpler. Like basically inputs are taken here, x and y, and basically you simply have to print the minimum out of them, right? So let's see the next question, which is card game. And in this question we have, there's a set of n cards which were numbered from 1 to n, and chef throws a card number x. Then you have to find the number of ways Chefina can choose a card from the remaining deck such that the sum of the chosen card and x is even. Okay. And you will be given n and x. Okay. So basically it is like you will be given with two integers, which is n and x. So there's a deck of cards uh, which is from 1 to n. So there are consecutive number of cards, right? And you are basically given x card which chef has chosen. Okay. This has been chosen by chef. Now Shafina is another player and she is going to choose another card from the remaining number of cards. Okay. There would be of course n minus 1 cards remaining. So now the thing is, suppose let y be the card number that Shafina has chosen. So you have to ensure that whether x plus y is even or not, right? So um, as we know that even plus even is yields in even, odd plus odd is also even, right? But odd plus even is odd. So this case is not of our basically we are not looking for this case. So this would be discarded and we'll be looking at these two cases. So if x plus y has to be even, then either x and y both will be even or they both will be odd. So if the given number x, it comes out to be odd. Okay. So what is Shafina left with? Shafina is left with, let's assume that there were n cards, okay, and there were odd number of odd cards and even number of even cards. Okay. Now, if x is already odd, then the odd cards left in the deck has decreased by one, right? So uh, remaining deck में odd minus one number of odd cards होंगे exactly, right? Out of these odd minus one cards, Shafina can choose any of the card and the total sum would be even, right? बट अगर x even होता, मतलब कि शेफ ने अगर even कार्ड चूज किया होता तो क्या होता? तो ऑब्वियसली जो शफीना को चूज करना होगा
that has to be even again because even plus even is even, right? तो जो eve number of cards थे, eve number of cards, तो remaining cards would be eve minus 1, right? Eve minus 1 would be the remaining number of even cards. Eve minus 1 choices है शफीना के पास. You can choose any of the card and again x plus y would be even, right? So this is the like basically explanation for this question. Let's see the implementation. It would be more clear there. So like the test cases are also there. So I have taken the test cases also. And then there are two numbers n and x. Okay. And so basically there are two numbers n and x. Then I have, as explained in the mm, explained before, that I'll be basically counting that how many odd cards are there available with me and how many even cards are there. Initially, both would be n by 2, right? And if n is odd, then odd would be like more, uh, like it would be one more than the even one, right? Like if there are 9 cards total, labeled from 1 to 9, then there would be 5 odd cards and 4 even cards, right? That only I have done. Like 9 by 2 would be 4, and then if 9 is odd, like the number of cards is odd, then you have to increment it by 1 to get the odd number of cards, right? But the even cards would remain same. So initially both were initialized with n by 2, but if n is odd, then you have to increment odd, right? Now there are two cases, if x is odd or if x is even. So if x is odd, then odd plus odd is even, thus the number of odd numbers from the remaining cards would be our answer. That would be odd minus 1. And if basically x is even, then even minus 1 will be our answer. Okay, so that is all for this question. Let's see the next question. The next question says that there are two candidates, A and B, which are basically contesting an election across n states where n is odd. Okay, a candidate wins in a state if they receive more votes than the opponent. The candidate who wins in more than half of these states wins the election. Okay. Now in the ith state, candidate A has received AI votes and B has received BI votes. Okay. And Chef has the power to cast X votes and he can distribute these votes between multiple states to help the candidate A. Determine if these additional X votes could secure enough victories for candidate A to win the election or not. Okay. So the question says that you are basically there are uh, two candidates in an election, A and B. Okay. And there are n cities or n states in that election involved. So let's assume these are the n states. And in each states, we have the number of votes casted for A and B respectively. Like A1 votes were casted in the first city, okay, and B1 votes were casted for candidate B in the first city. Similarly, A2 in the second city for A and B2 in the second city for B. Okay, so these are the number of votes casted. Now, what happens is like if uh, we have to decide that in the first city itself, if A is going to win or B is going to win, then we will compare A1 and B1. Or to generalize it, we can say for the ith city, what we will compare AI and BI, right? If AI is strictly greater than BI, then basically A wins or the person A wins for that city, for ith city. And there are n such cities. So if at least at least n by 2, basically the floor of n by 2, because n is odd here, right? Is given odd. So floor of n by 2 means nothing but n by 2 plus 1, right? C, if like, sorry, this is seal of n by 2 and this is seal of n by 2. So basically it is as good as floor of n by 2 plus 1. Okay.
So the thing is that so basically to win the election, you have to win at least in n by 2 plus 1 cities. Okay. Now what happens is F has an additional power that he can cast X votes in the favor of A. Okay, additional X votes. So now let's assume a scenario where AI was less than equals to BI. In this scenario, AI, the person A is not going to win, right? Either it will be a draw or B is going to win. B wins. Okay. In this scenario, neither of the cases, what Chef will do, Chef will try to cast uh, some number of votes which are less than equals to X, and Chef will see if the person A can win it in that city or not. Okay. Let's assume that BI minus AI is the difference of votes. ठीक है मतलब कि BI minus AI votes is the difference. Hmm. Hmm. So BI minus AI is the difference of votes which you have. Now अगर तुम ऐसे समझ के चलो कि अगर BI minus AI 0 होता है ना इसका मतलब ड्रॉ है राइट यू जस्ट नीड एग्जैक्टली वन वोट टू बी कास्टेड इन द फेवर ऑफ ए एंड ए जीत जाएगा अगर BI minus AI नेगेटिव होता राइट इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि BI इज लेस देन AI मतलब कि ए ऑलरेडी जीत रहा है तो तुमको कोई भी वोट कास्ट करने की जरूरत नहीं है जीरो बट वी वर इंटरेस्टेड इन द केस वेयर AI is less than equals to BI, right? So this is not of our use. This is of our use, and BI minus AI is greater than zero. This is of our use. Why? Because BI is going to be greater than AI here, and हमको AI को जिताने के लिए कितने votes कास्ट और करने पड़ेंगे? That would be nothing but BI minus AI plus one, right? So ultimately, अगर तुम BI minus AI plus one votes कास्ट करते हो, for which case? For the case where BI minus AI is greater than equal to zero, right? For this case, or you can say that where AI is less than equal to BI. For this case, अगर तुम BI minus AI plus one votes cast करते हो, then A is going to win in that city, right? Now the thing is, barrier on this thing is कि you can cast at max X votes. तो तुम क्या करोगे? तो तुम सबसे पहले तो उन cities को काउंट करोगे जो कि जिसमें A ऑलरेडी जीत रहा है. फिर तुम ग्रीडीली उन cities में A को जिताना चाहोगे ना जहाँ पे कि BI माइनस AI ये जो डिफरेंस है ये कम है राइट पॉजिटिव है और कम है राइट बिकॉज अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है लाइक वी हैव सीन इन दिस केस अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ए जीत रहा था अगर ये पॉजिटिव है या जीरो है ना तो हमारे काम का है तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि BI और AI के बेसिस पे मतलब इस डिफरेंस के बेसिस पे अ, एक वेक्टर बना लेंगे जिसमें कि हम स्टोर करेंगे कौन सी वैल्यूज BI माइनस AI राइट और फिर अल्टीमेटली इस वेक्टर को अगर हम सॉर्ट कर लें तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा कि कुछ वैल्यूज तो नेगेटिव होंगी फिर हो सकता है कोई वैल्यू जीरो हो है ना और फिर कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि ग्रेटर देन जीरो होंगी दिस कुड बी द सिनेरियो व्हेन वी सॉर्ट दिस वेक्टर ठीक है तो ये जो नेगेटिव वाली जो वैल्यूज हैं उन पे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे तो ए ऑलरेडी वाज विनिंग राइट ए वाज विनिंग ठीक है नाउ दीज वैल्यूज वेयर BI माइनस AI इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ठीक है इन वैल्यूज पे हमको कुछ वोट्स कास्ट करने पड़ेंगे और वो भी हम इस ऑर्डर में कास्ट करेंगे लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ताकि हम कम से कम वोट्स का यूज करके ए को जिता पाए दैट वुड बी BI minus AI plus one votes would be required for A to win in the ith city right if while exhausting all the X votes ultimately अगर count the number like count is the number of cities
जिसमें कि ए जीत पाता है। इफ दिस इज लिटरली ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 + 1, है ना, इस सिनेरियो में ए इलेक्शन जीत जाएगा, वरना ए इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। ओके, so I hope I'm clear. Let me sum up for you once again because it went a bit long. बेसिकली कर कुछ नहीं रहे हैं, हम बस डिफरेंस देख रहे हैं एआई और बीआई का। और एआई और बीआई के डिफरेंस के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट इसलिए कर लिया है कि हम कम से कम वोट्स, बेसिकली हमारे पास एक्स ही वोट्स है ना जो हम दे सकते हैं ए को जिताने के लिए, तो हम कम से कम वोट देने की कोशिश करेंगे ना, ताकि ए ज्यादा से ज्यादा शहरों में जीते। इसलिए हमने उसको एआई, सॉरी, बीआई माइनस एआई के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया। तो जो से कम वोट जहाँ रिक्वायर्ड थे वो सिटी पहले आ जाएगी, राइट। तो उस सिटी वो सिटी पहले आ जाएगी, तो वी कैन सेफली से दैट कि इस सिटी में हमने शेफ को जिता दिया है। और अगर कोई ऐसी सिटी मिलती है जहाँ पे तुम शेफ को नहीं जिता पाए, तो उसका मतलब उसकी आगे आने वाली किसी भी सिटी में नहीं जिता पाओगे, राइट। बिकॉज अगर किसी सिटी में 3 वोट्स रिक्वायर्ड थे एक्स्ट्रा, है ना, शेफ को जिताने के लिए, और तुम उसको नहीं जिता पाए, मतलब तुम्हारे पास एक्स एग्जॉस्ट हो गया, राइट, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वोट्स से एग्जॉस्ट हो गए, तो उसके आगे आने वाले नंबर्स तो उससे बड़े ही होंगे, ग्रेटर देन 3 होंगे, इसका मतलब तुम उसमें भी नहीं जिता पाओगे। So you can simply break out of this loop and basically you can have your answer, okay, as count. So that was all for the explanation part. Let's see how it is implemented in code. Uh, We have its code here. So solve is the function where I'm dealing with the test cases. I have taken the test cases here and called solve function for each test case. Okay. Now, like in the input format, I am having two numbers n and x, and I am having these two vectors ai and bi, right. I'm creating another vec of I which is basically storing bi minus ai, right. So I have taken the inputs ai and bi, and then I have created another vector vec of I equals to bi minus ai, right. Then I have sorted them in ascending order. Then I'm having my count that how many in how many cities chef is winning. Okay. So if vec of I is negative, मतलब कि a पहले से जीत रहा था, not chef a, okay, player a. So what I can do, I can just simply do a count plus plus and I can simply continue. But if chef was not winning, like vec of I was greater than equal to 0. Sorry, I'm saying again and again chef, but I meant player A. If player A was not winning, then I have to check if I am having some values of x left or not. If I'm left with some possible values of x, basically I have some votes which can be casted. Then what I will do, I will check again that if x is greater than vec of I, then x has to be greater than vec of I, right? अगर उसके बराबर होगा तो भी बात नहीं बनेगी ना, उसके बराबर हुआ वेक ऑफ आई के, तो वो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मान लेते हैं कि बी आई माइनस ए आई की वैल्यू 3 थी, मतलब कि अगर मैं 3 वोट्स और दे देता हूँ ए आई को, तो क्या होगा, बी आई और ए आई बराबर हो जाएंगे ना, इस केस में ड्रॉ होगा। अगर मुझे ए को जिताना है तो इस केस में मुझे ए को 4 वोट्स देने पड़ेंगे ना, विच इज बी आई माइनस ए आई प्लस 1, राइट। अगर यहाँ पे x इक्वल टू वेक ऑफ आई होता, तो ए नहीं जीत पाता ना, ये आई हैव टू कीप दिस एज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो मैं क्या करूंगा, काउंट टू प्लस नंबर ऑफ सिटीज जिसमें ए जीत रहा है उसमें एक वन इंप्लीमेंट कर लूंगा, और एक्स में डिक्रीज कर लूंगा नंबर ऑफ वोट्स जितने मैंने यूज किए, विच इज नथिंग बट वेक ऑफ आई प्लस 1। व्हाट इज वेक ऑफ आई, बी आई माइनस ए आई। तो वही जो हम कह रहे थे कि बी आई माइनस ए आई प्लस 1 वोट्स रिक्वायर्ड है, उतने नंबर ऑफ वोट्स डिक्रीज कर लेंगे एक्स में से। एंड इफ एक केस ऐसा आता है जहाँ पे एक्स सफिशिएंट नहीं है, मतलब एक्स जीरो हो चुका है, राइट, तो हम वी कैन सिंपली ब्रेक, बिकॉज हम, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड कि अगर तुम किसी ऐसी सिटी को नहीं जिता पा रहे हो जिसमें इतने नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड थे, तो उसके आगे की सिटीज के लिए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। देन आई कैन सिंपली सी दैट इफ count is greater than equal to n/2 plus 1, then you can simply print the yes, or else you can print the no. Okay, so that was all for this question. Let's see the next question.
So the next question is random name, and the question says that Alice and Bob are playing a modified version of the name game, and there are n pile of stones where a ith pile contains AI stones, and in each turn, Alice and Bob roll a fair D-sided die, and the player who rolls the higher number of gets to make a move. If they roll the same number, Alice gets to make the move, right? So during their turn, a player must select exactly one non-empty pile and remove at least one stone from it, and the player who makes the last valid move wins the game. Okay. Now, given the that both players play optimally, calculate the probability that Alice will win the game. Okay. So, this question basically says that you're playing name game. Okay. So, name game is a kind of game where you have some piles of stones. Okay. You have some piles of stones. So, assume this is a pile of stone, this is another pile of stone, this is another pile of stone, and this is another pile of stone. So we have the four piles of stones, and the first one contains 18 stones, the another contains 13 stones, the third one contains, let's say, 5 stones, and the last contains, let's say, 7 stones. So now the game goes like, let's suppose Alice goes first. So what she can do is she can select either of the pile which has at least one stone remaining. Okay, so as you can see, all the four piles have at least one stone. So let's say Alice chooses the second pile, and what she can do is she has to remove at least one stone. He can remove all of them, but at least one stone she has to remove. And then uh, Bob comes next. Bob will also do the same task. So this task keeps on going until there is no pile left with at least one stone. That is, all the stones are exhausted. Okay. When all the stones would be exhausted, then you can say that the game ends and the player to make the last move wins. Okay. Now, so this is a very standard, basically, game theory problem. Nim game basically is a very standard game. Okay. So I won't be explaining the approach that how it is solved, but I will be like sharing with you that this game theory is solved. Basically, it has the solution that what you can do is like you are given uh, uh, n piles, okay, and there are ai number of stones in each pile. Then what you can do is like this array a, okay, there are some elements like a1, a2, and so on. These are basically number of stones in each piles. You can compute a value which is nothing but XOR of array, okay, and if there can be two cases, this value equals to 0, this value is non-zero. Okay, if this value comes out to be 0, then you can say that Bob is having a winning strategy, and if it is non-zero, then Alice has a winning strategy. Okay, considering the fact that Alice moves first and Bob moves second. Okay, so we can simply see that if this XOR value is non-zero, okay, then the player which is going to move first wins. This is a winning strategy, right? And if this XOR of this array is 0, then the player who's moving second wins. So only this is the thing which you need to know. And basically, if you want to read more about NIM game theory, then you can refer to a CF. Uh, we have this CF blog here, which is written by a master on CodeForcer. So here he has explained in detail that
how these name games are basically how you come up with this winning strategy, and also you can go through this blog. We'll be sharing this link in the description as well. Okay, so you can go through this, or you can just simply write on Google name game theory and you can read about this more. Okay, the thing which we require for this question is just this thing, that if the XOR of the array is 0, then Bob has a winning strategy, that is the second player. Now the twist in the question is that we don't know who is moving first. Okay, we don't know either Bob makes the first move or Alice makes the first move. Okay, now what they are doing for deciding the move, they are basically throwing a die. Okay, they are throwing a die, and that die is d-phased. Okay, d-phased means that there are d number of possible outcomes. Like if a die is 5-phased, it means that there can be possible outcomes 1, 2, 3, 4 until 5. Okay, similarly, what is d-phased? Then 1 to d, all number of possible combinations are possible, right? Now, the thing is that who makes the move is, like, if like Alice, sorry, Alice and Bob are there, right? Right. Alice also throws the die and Bob also throws the die. Let's say Alice gets A number on the die, right? And Bob gets B number on the die. So if A is greater than equals to B, then Alice is going to make a move first. And if A is less than B, then Bob is going to make the move, right? So you just have to calculate the probability of winning for Alice, right? This is the question. You have to calculate the probability of winning of Alice. Now, let's see the number of favorable outcomes for Alice. Okay. What would be the number of favorable outcomes? Favorable outcomes would be, like, there would be two cases where Alice goes first. Goes first means that Alice has a winning strategy. Okay, has winning strategy. So basically, if Alice has winning strategy, that means that, like, based on the nim value, like if I call this XOR value as the nim value, right? Let's call it as nim value. If this nim value is non-zero, okay, then the player who is going to move first has a winning strategy. तो अगर हमको ये XOR वैल्यू नॉन जीरो आती है, ठीक है, इस केस में अगर हमको चाहिए कि एलिस जीते, है ना, तो एलिस हैज टू गो फर्स्ट, है ना, मतलब मूव में जो भी डाई पे मूव होगा, इन दैट एलिस हैज टू गो फर्स्ट, ठीक है। एलिस को पहले चलने के लिए क्या चाहिए, ये कंडीशन, ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी ऑन द डाई। तो अगर हम डाइस के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करें, ठीक है, मतलब बेसिकली स्कोर की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करें कि ए और बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ए और बी, राइट। सो वी हैव दिस D cross D matrix, right? So it is a D-phased die. For a D-phased die, we have this D cross D matrix such that uh, each element represents AI comma BI, मतलब scores of Alice and Bob. So could be either 1 comma 1, right? It could be 1 comma 2. मतलब जो पहला element है, that is representing score of Alice and the second is representing score of Bob. So similarly, if I am going to fill this matrix, it would be like L1 comma D, and it would be 2 comma 1, 2 comma 2, and so on till 2 comma D. Similarly, it would be till D comma 1 and D comma 2, and so on till D comma D, right? So I'm searching for the case where AI is greater than equals to BI for Alice to go first, right? अगर Alice फर्स्ट जाए, तो if you were to see, like, अगर
यू आर फैमिलियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, लाइक इफ दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। तो लाइक सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3,3, ठीक है। इफ यू टेक दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहला एलिमेंट होता है 1 1, देन यू हैव 1 2, देन 1 3, ठीक है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडेक्सेस, है ना। और दिस इज 2 1, 2 2 and 2 3, this is 3 1, 3 2 and 3 3. Consider these two numbers like comma separated. I have not put a comma here, but you can consider them. तो बेसिकली अगर हम एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को देखेंगे, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ए आई ग्रेटर देन बी आई रहे, देन आई विल बी लुकिंग अपॉन दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, और किसी भी वैल्यू में ए आई ग्रेटर देन बी आई नहीं है, राइट। सो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ये एक ट्राइंगल फॉर्म करता है, राइट। If you are familiar with the lower triangular and upper triangular matrix, so basically this is an upper triangle in the matrix, which is basically these दो triangles form होता है, ये एक upper triangle और एक lower triangle which is separated by the principal diagonal. तो ये basically तुम्हारा principal diagonal है। principal diagonal की property क्या होती है? principal diagonal is the diagonal which contains all the elements which has ai equals to bi। तो हमको ये भी यूज का है बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर द कंडीशन ai ग्रेटर देन इक्वल टू bi। ऐसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? ऐसे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और n क्रॉस n मैट्रिक्स है ना। अगर हम d क्रॉस d मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे d एलिमेंट्स होंगे, राइट। लाइक देयर आर 3 एलिमेंट्स हियर, दिस इज 3 क्रॉस 3, 1 1 2 2 एंड 3 3, जहाँ पे ai इक्वल टू bi है। एंड ai ग्रेटर देन bi के कितने एलिमेंट्स है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वैसे तो मैट्रिसेस में, दैट इज n into n minus 1 by 2, but I can also prove this. It is a simple proof that अगर हम ए आई ग्रेटर देन बी आई की बात करें, ठीक है, ए आई अगर 1 है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर बी आई, फॉर ए आई टू बी ग्रेटर देन बी आई, राइट। सॉरी सॉरी सॉरी, देयर इज सम बेसिकली मिस्टेक है, मैंने गलत ट्राइंगल चूज कर लिया। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द ट्राइंगल। बेसिकली तुमको लोअर ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा, राइट। You have to choose this lower triangle for AI greater than BI, right? Although number of elements would be same, like n into n minus 1 by 2, because it is symmetric, right? On the either side of the principal diagonal, it is symmetric. तो AI greater than BI के लिए तुमको 2,1 3,1 3,2 3, सॉरी नॉट 3,3, ये 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो अगर AI 1 है, तो कोई भी BI की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर AI की वैल्यू 2 है, वी आर डिस्कसिंग द केस वेयर AI इज ग्रेटर देन BI, ठीक है। इस केस के लिए for 1 it is no value is possible. If ai is 2, then bi could be 1 only, and if ai is 3, then bi could be 1 comma 2। तो हमेशा अगर तुम इस ट्राइंगल को देखोगे, लोअर ट्राइंगल को, तो देयर वुड बी increasing number of values as you go down, like there were 0 values here in this triangle, then यहाँ पे एक वैल्यू थी, then यहाँ पे 2 वैल्यूज थी, and it is also you can see here even ai was 1, है ना। अब कोई bi की पॉसिबल वैल्यू नहीं थी। जब ए आई 2 था, तब एक वैल्यू पॉसिबल थी, देन ए आई 3 था, देन 2 वैल्यूज पॉसिबल थी। तो यू कैन बेसिकली यू कैन रन डाउन, एंड तुम कहाँ तक जाओगे? तुम बेसिकली डी तक जाओगे, राइट। ए आई की वैल्यू डी तक जाओगे, एंड इन दैट सिनेरियो यू विल बी हैविंग possible values of b as 1 comma 2 comma and so on till d minus 1, right। तो बेसिकली तुम्हारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तुमको लोअर ट्राइंगल में निकालनी हुई, दैट वुड बी नथिंग बट 1 प्लस यहाँ पे कितनी वैल्यूज है? 2 है, एंड सो ऑन टिल यहाँ पे d माइनस 1 वैल्यूज है, राइट। यहाँ पे d माइनस 1 वैल्यूज है, यहाँ पे e की वैल्यू थी, यहाँ 2 वैल्यू थी, फिर 3 वैल्यू हुई होगी, इस तरीके से। इट इज नथिंग बट सम ऑफ
these natural numbers 1 plus 2 plus d plus and so on till d minus 1, which is as good as d minus 1 into d by 2, right? तो ये तो बेसिकली लोअर ट्राइंगल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए. एंड इफ ए आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी आई, अगर हम इस केस को सर्च कर रहे हैं तो हमको प्रिंसिपल डायगोनल भी इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज दिस थिंग जहाँ पे ए आई बी आई बराबर है. तो इस नंबर में मुझे प्लस डी ऐड करना पड़ेगा टू गेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इट वुड बी डी स्क्वायर, like d minus 1 into d would be d square minus d plus 2d upon 2. It comes out to be d square plus d by 2, right? It can be, d can be taken as common and it can be written as d into d plus 1 by 2. So this is the scenario जहाँ पे एलिस को पहले चांस मिलेगी, ठीक है. नाउ इफ एलिस को पहले चांस मिलेगी और एलिस जीत जाएगा तो total number of outcomes, like if I am to calculate probability of an event E, it is equals to number of favorable outcomes divided by number of total outcomes, right? Total outcomes, favorable outcomes upon number of total outcomes. तो ये तो हमारे favorable outcomes है for the case, for which case where the ZOR value, that the nim value was non-zero, ठीक है. उस केस के लिए ये favorable outcomes है. और total outcomes क्या है? Total outcomes is t square, right? Because ये जो n cross n की जो और d cross d की जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, right here it is d cross d, तो total outcomes तो d cross d है. Okay, for this case, so we can say that if we simplify this, it would be, एक d से d कट जाएगा, it would be d plus 1 upon 2d, ठीक है. This is the probability of winning of Alice, ठीक है, for the case where nim value is non-zero. अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं जहाँ पे कि we can take nim value as 0, that means that the player going first is going to lose. तो जो पहले जाएगा वो हारेगा. तो हमको क्या चाहिए कि एलिस बाद में जाए, मतलब कि बॉब पहले जा रहा होगा, है ना. तो बॉब पहले कब जाएगा? बॉब सिर्फ एक ही केस में पहले जाएगा वेयर बी आई इज ग्रेटर देन ए आई. तो हम अगर फिर से अपनी मैट्रिक्स को देखें जो हमने बनाई थी, तो बी आई अगर ग्रेटर देन ए आई हमको चाहिए, बी आई ग्रेटर देन ए आई, तो वो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में होगा, राइट. वो बेसिकली अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में होगा. और इस बार हम प्रिंसिपल डायगोनल को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमको बी आई इक्वल टू ए आई नहीं चाहिए, राइट. वी ओनली वांट बी आई ग्रेटर देन ए आई. सो विथ दिस थिंग I can conclude that if nim value is 0 and I want bi greater than ai, then how many elements are of my use, or the number of favorable outcomes would be, nothing but जो हमने यहाँ निकाला था, that value was d into, sorry, uh, this was the value, right, d into d minus 1 by 2, जो कि एक अपर ट्राइंगल या लोअर ट्राइंगल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. बिकॉज हम वी आर नॉट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल हेयर, it would be d into d minus 1 by 2 and total outcomes would be d square, ठीक है. तो अगर हम probability of a in this case निकालें to win, तो d से d कट जाएगा, it would be d minus 1 by 2. So we can summarize it into two cases based upon the nim value. So if nim value is 0 and if it is non-zero, if it is non-zero then the player going first will win. तो हमको एलिस को चाहिए कि वो फर्स्ट मूव करे. तो probability of a is d plus 1 by 2, and in this case probability of a is d minus 1 by 2, d, ठीक है, d minus 1 by 2d and d plus 1 by 2d. तो अब हमारा, हमको बस इतना सा करना है कि हमको probability of a को, there is one more thing here कि you have to return the probability of p can be written if in the form of p by q, okay, so that q is not divisible by 1 9 plus 7. Then you have to output the number of values, output the values
मॉडुलो बेसिकली यू हैव टू डू मॉड्यूलर अरिथमेटिक है। तो अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, लेट दिस बी पी एंड लेट दिस बी क्यू, राइट? तो तुमको बेसिकली पी बाई क्यू मॉडुलो मॉड ये रिटर्न करना है, ठीक है? तो डिवीजन में जैसे नॉर्मली होता है अरिथमेटिक में, मॉड्यूलर अरिथमेटिक में कि मॉड सेपरेट हो जाता है। मतलब इफ यू वर टू डूइंग पी प्लस क्यू मॉडुलो मॉड करना होता, तो पी मॉड पी मॉडुलो मॉड प्लस क्यू मॉडुलो मॉड ये काम कर जाता है। मतलब इट इज एज गुड एज कि तुम मॉड मॉड को बांट दो दोनों में। बट डिवीजन में ये काम नहीं करता है, ठीक है? दैट इज द पार्ट ऑफ मॉडुलर अरिथमेटिक, तो यू कैन रीड अबाउट दैट। अगर तुमको पी बाई क्यू मॉडुलर मॉड निकालना है, देन बेसिकली पी बाई क्यू को तुम पी इंटू क्यू इनवर्स लिख सकते हो, है ना? अगर इस पे हमें मॉडुलर मॉड लगाते हैं, तो अगर तुमको इट इज एज गुड एज मल्टीप्लीकेशन में तुम सेपरेट कर सकते हो, ठीक है? पी मॉडुलर मॉड इंटू क्यू इनवर्स मॉडुलो मॉड। अब इनवर्स एक्सपोनेंशिएशन में अगर तुमको मॉडुलस करना है बेसिकली, तो दैट इज एज गुड एज क्यू टू द पावर mod minus 2 multiplied by this p modulo mod. This has a derivation. Basically you can read about it if you don't know this thing. Yeah, you can read about modular arithmetic. Okay, then you will get to know this thing. So basically this was the explanation part कि तुमने probability कैसे derive करी, and then you just have to apply this modular arithmetic thing. ठीक है? Let's see the implementation. So in the implementation we have, like, for each test case I'm taking these two values n and d. Okay, d is the face of the die, how many faces are there, and n is the number of piles. Okay, then I'm taking the input as vector here, and I'm calculating val as the nim value, that is the XOR of all values, right? Then I'm initializing x and y, basically p and q तुम ले सकते हो. So in either of the scenario you can see that my denominator is 2d. ठीक है, तो मैं q को या y को हमेशा 2d रखूंगा, एंड बेसिकली बेस्ड ऑन द केसेस जहाँ पे जीरो है या नॉन जीरो है, तो मैं d-1 या d+1 रखूंगा, राइट? तो मैंने y को इनिशियलाइज कर दिया 2d से, है ना? एंड इफ वैल्यू इज नॉन जीरो, x को मैं d+1 रखूंगा, वरना मैं x को d-1 रखूंगा. एंड देन आई हैव टेम्पलेट फॉर दिस थिंग कि मॉड्यूलर डिवीजन के लिए, बट यू कैन स्टडी, like, if you don't know about modular division. So I am just simply having my template that gives me uh, x modulo, sorry, x divided by y modulo mod. So this is going to give me the modular division, and then I can simply print my answer. Okay, so that was all for this problem. Let's see the next question. So the next question says that chef is playing a game where he battles monsters to defeat as many as possible, and he starts with an initial health of h units, which can decrease with each battle. In each battle, chef's current health p will drop to a d, where d is the largest divisor of p other than p itself, and the game ends where chef's health reaches 1. Okay. Now before starting the game, you can multiply chef's initial health h by any integer m, which is in the range of 1 to k, and you have to maximize the number of monsters he can defeat, right? And determine the maximum number of monsters chef can defeat if you choose the optimal value of m. Okay. Basically you are given with an initial health h. ठीक है, तो अब हो ये रहा है कि h is your initial health and you are fighting monsters, ठीक है? और तुम अगर किसी भी एक मॉन्स्टर से लड़ते हो, और तुम्हारी हेल्थ अगर करेंटली p है ना, तो वो ड्रॉप हो जाएगी d पे, सच दैट d इज द लार्जेस्ट डिवाइजर ऑफ p नॉट इक्वल टू p इटसेल्फ, ठीक है?
largest divisor of p which is not equals to p itself. तो it simply means that कि अगर तुम largest divisor of p निकालना चाहते थे नॉर्मली, तुम क्या करते, p डिवाइडेड बाय 1 करते, दैट इज p। अगर तुमको लार्जेस्ट डिवाइजर ऑफ p नॉट इक्वल टू p चाहिए तो तुम ऐसा एक छोटे से छोटा नंबर ढूंढोगे डिनोमिनेटर के लिए जो कि p से p को डिवाइड करता हो, राइट। लाइक इफ p बाई 2 हो सकता है वो लार्जेस्ट डिवाइजर d हो, है ना, या फिर वो p बाई 3 हो सकता है, या फिर वो p बाई 4 हो सकता है, या फिर वो p बाई, वो बेसिकली p बाई 4 नहीं होगा, दैट हैज टू बी अ प्राइम नंबर, p बाई 5, p बाई 7 एंड सो ऑन। व्हाई अ प्राइम नंबर? बिकॉज होता ये है कि कोई भी नंबर n जो है, दैट इज ऑलवेज कैन बी, इट कैन बी ऑलवेज प्राइम फैक्टराइज्ड, राइट। इसका हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, लाइक यू हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस। तो अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ना, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है, का जो जो कि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो होगा, it can number can always be expressed into this largest divisor d into its smallest prime factor, and it is called SPF। ठीक है, तो this d into SPF can be written as n। अगर तुमको मतलब ये चीज नहीं समझ आ रही है तो तुम इसको ड्राई रन करके खुद से भी फिगर आउट कर सकते हो कि अगर किसी भी नंबर n का सपोज 21, इसको अगर तुमको इसका लार्जेस्ट डिवाइजर d ढूंढना है, देन यू जस्ट हैव टू फिगर आउट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 21 को डिवाइड करता हो, विच इज 3, राइट। 2 तो डिवाइड नहीं करेगा, स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2, तो तुम 2 से शुरू करो। तो इफ n इज नॉट डिविजिबल बाय 2 तो तुम नेक्स्ट प्राइम पे मूव कर जाओ विच इज 3, तो 3 से 21 को डिवाइड करो विच इज 7, राइट। दिस इज द थिंग कि, एंड तुम बेसिकली प्राइम फैक्टर से इसलिए डिवाइड कर रहे हो कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता सपोज, है ना, तो वो 2 से भी तो डिविजिबल होता। अगर तुम लार्जेस्ट डिवाइजर की तरफ जा रहे हो टू फाइंड दिस टी, तो तुम छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करोगे ना, और हमेशा एक प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करोगे बिकॉज दैट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई भी नंबर एन है, जैसे मान लो n24 है, एन को तुम ऐसे लिख सकते हो कि एन को अगर तुम दो डिवाइसेस के मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिखते हो, लाइक 6 into 4, है ना, 6 can be further divided into 2 into 3, this can be further divided into 2 into 2, है ना। बट अगर तुम इसको 12 into 2 लिखते, then 2 is a prime number जहाँ पे 2 cannot be further divided, then this another divisor is compelled to be this t, the largest divisor, right? So this is the thing which I am basically trying to tell you is, if you are figuring out this value d, then you have to figure out this SPF। What is SPF? Smallest prime factor जो कि इनको divide करता है, right? So for this thing, because we are having constraints that this n, basically this health is as large as 1e6। अगर तुमको health का largest divisor ढूंढना होता, है ना, तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे sieve यूज कर सकते हो। तुम sieve यूज करके अगर एक primes array नाम की एक array बना लो, such that primes array contains all the prime numbers which are less than equal to 1e6, ठीक है, all the prime numbers। अगर मैं एक ऐसी एरे बना लेता हूँ तो मुझे बस इतना सा करना है कि मैं if h is divisible by this primes of I or not, इतना चेक करूंगा, है ना। जो भी पहला प्राइम नंबर मेरे को इसे डिवाइड करता हुआ मिल गया, आई कैन सिंपली रिड्यूस h टू h डिवाइडेड बाय प्राइम्स ऑफ I, है ना, हेल्थ मेरी डिक्रीज हो गई, राइट। h डिवाइडेड बाय प्राइम्स ऑफ I इज नथिंग बट d, h डिक्रीज हुआ d पे, सिमिलरली मेरा न्यू हेल्थ अपडेटेड क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। And again I can run on this primes array and I can find the SPF, और अगेन मैं करंट हेल्थ h को SPF से डिवाइड कर दूंगा टू गेट दिस वैल्यू, राइट। So this is the
वैल्यू फॉर फिगरिंग आउट कि मैं कितने स्टेप्स में एच को 1 तक रिड्यूस कर सकता हूँ, है ना। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि तुम एक और इंटीजर m से मल्टीप्लाई कर लो हेल्थ को, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को मार पाओ। एंड दिस इंटीजर m रेंज 1 to k, ठीक है। एंड k इज गोइंग टिल 1e12, ठीक है। नाउ अब इस k का क्या करना है। अब तुम एक चीज समझो, मतलब h का तो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया कि h का क्या करना है। तो बेसिकली मान लेते हैं कि तुम्हारी फाइनल वैल्यू h इंटू एम होती, तो h जितने स्टेप्स में रिड्यूस हो रहा है, सपोज h k1 स्टेप्स में रिड्यूस होता और m k2 स्टेप्स में रिड्यूस होता, है ना। तो एट लास्ट अगर तुम h इंटू एम की बात करो, तो ये हमेशा हमेशा ही k1 प्लस k2 स्टेप्स में रिड्यूस होगा, है ना। तुम k1 को तो छेड़ नहीं सकते हो, राइट, बिकॉज k1 इज फिक्स्ड। बाय, बिकॉज h हमेशा d में रिड्यूस होगा, देन d वो किसी और d में रिड्यूस होगा, d1 d2 एंड सो ऑन टिल 1, इस तरीके से रिड्यूस होगा। बट m इज द नंबर विच यू हैव अ चॉइस। व्हाट इज द चॉइस, चॉइस इज बिटवीन 1 to k। अब m तुम वाइजली चूज कर सकते हो, सपोज k की वैल्यू 12 होती, ठीक है, तुम 1 से 12 तक कोई भी नंबर चूज कर सकते थे। अब तुम बड़े से बड़ा नंबर चूज करने की कोशिश करोगे टू मैक्सिमाइज दिस थिंग k2, बट वो नंबर क्या होगा, और उस नंबर के नंबर ऑफ स्टेप्स, बेसिकली दिस k2 की वैल्यू हम जल्दी से जल्दी कैसे ढूंढ सकते हैं, बिकॉज k इज एज लार्ज एज 1 in 12, राइट। ये 10 की पावर 12 तक जा रहा है, तो हम कम टाइम में कैसे ढूंढ पाएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स। तो तुम एक चीज देखो कि अगर सपोज k की वैल्यू 12 होती, तो अगर तुम एक चीज देखो, अगर तुम 12 को रिड्यूस करो, 12 को रिड्यूस करोगे, इट वुड बी रिड्यूस्ड इन 6, 6 would be reduced in 3 and 3 would be reduced in 1, right। एंड अगर तुम 8 को रिड्यूस करो, 8 would be reduced in 4, 4 would be reduced in 2, 2 would be reduced in 1। अगर तुम 9 को रिड्यूस करो, 9 would be reduced in 4, sorry not 4, 4 is not a divisor of 9, 9 would be reduced in 3, 9 by 3 is 3, 3 would be reduced in 1, है ना। अब अगर 4 अगर तुम 10 को रिड्यूस करना चाहते थे, then 10 would be reduced to 5, 5 would be reduced to 1। 11 को करते, 11 would be reduced to just 1, because 11 is a prime number, ठीक है। तो इसमें से हमको ये समझ आता है कि 12 को रिड्यूस करना बेनिफिशियल होगा और 8 को रिड्यूस करना बेनिफिशियल होगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मैक्सिमाइज माई k2, लाइक द k2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 2 3, k2 इज 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। k2 इज बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में वो 1 तक रिड्यूस हो रहा है ना। और तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो 1 से 12 तक। तो दो चीजों का ध्यान रखोगे कि एक तो बड़ी से बड़ी वैल्यू चूज करो, और दूसरा ऐसी वैल्यू चूज करो जो कि ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में रिड्यूस हो। ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है जो कि पॉसिबल है, दैट इज 2। क्यों ना तुम नियरेस्ट 2 की पावर खोज लो, नियरेस्ट पावर ऑफ 2, बिकॉज किसी भी नंबर x को, मान लो वो 2 3 5 इन तीनों से डिविजिबल होता, तो उसका लार्जेस्ट डिवाइजर d क्या होगा, वो x/2 होगा ना, x/3 या x/5 तो नहीं होगा, है ना। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि तुम नियरेस्ट पावर ऑफ 2 अगर खोज लो, दैट इज गोइंग टू मैक्सिमाइज योर k2। लाइक यू कैन सी हियर कि 1 से 12 में 12 की नियरेस्ट पावर ऑफ 2 क्या थी, 8 थी, विच इज इन द रेंज।
अगर 12 भी 3 स्टेप्स में रिड्यूस हो रहा है इन वन, then 8 is also going to reduce in 3 steps, right? Because अगर 4 steps में नंबर रिड्यूस होना था, then it has to be 16. 16 से छोटा कोई भी नंबर 4 स्टेप्स में रिड्यूस, मतलब लेस देन 4 स्टेप्स में रिड्यूस होगा हमेशा. Why? Because 2 is the smallest prime factor, है ना? तो बेसिकली अगर तुमको ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में 1 तक पहुंचना है, तो तुम ये चाहोगे कि H से D में जो रिड्यूस हो रहा है, ये बेसिकली ये जो गैप है, राइट, दिस गैप शुड बी लेस, ताकि हम ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में पहुंच पाए. और ये गैप बेसिकली कौन पूरा कर रहा है? ये एसपीएफ पूरा कर रहा है ना? एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एसपीएफ इज 2. सिंपली यू विल लुक अपॉन द पार्ट्स ऑफ 2. इसलिए तुम इस रेंज में नियरेस्ट पावर ऑफ 2 को अगर देख लेते हो इन 1 comma k, then the log of that nearest power, let's say p, is going to be your k2, right? log base to the base 2. ठीक है? या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि तुम k का log 2 ले लो, बेसिकली log to the base 2 k, and you take floor value of this. This would be as good as log to the base 2 of p. Why? Because अगर तुम 12 का log लोगे, that would be 3 point something, right? 3 point something. और जब इसकी floor value लोगे, it would be 3. Similarly, अगर तुम 8 का log 2 लोगे, it would be 3. So this thing is the thing कि अगर तुम floor of log 2 log k base 2 ले लोगे, that would give your answer. तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा, that would be nothing but k1 plus k2, right? तो तुम k1 तो निकाल लोगे. k1 कैसे निकालना पड़ेगा? sieve से. And k2 would be nothing but log 2 of k. ठीक है? So basically then you can simply print k1 plus k2. That was for the explanation. Let's see the implementation. It would be more clear there. Okay. So in the implementation part, I have uh, I have this template of sieve. Okay. In the sieve template, let me explain you this template once. N is basically the maximum number till where I'm generating sieve values. तो सबसे पहले मैंने ये boolean sieve array बनाई है, which tells me that if sieve of I is prime or not, then I have this primes array. ठीक है? It contains first n prime numbers. ठीक है? Then you have basically the create function of sieve. This is basically the code part of sieve. Okay. If you don't know sieve, then you can go and study about this thing. It is a very useful topic. Okay. And then in my main function, I'm calling these two functions, create and insert. Okay. What is create doing? Create is generating sieve. You know? And insert is basically generating that primes array. That is basically storing the first n prime numbers. Okay. Now you are having these two numbers as input h and k. तो हम वैल में तो log 2 निकाल लेंगे, log k base 2. ठीक है? This is a standard function in C++. It is going to give you log k base 2. ठीक है? So this is going to be my k2. Now k1 के लिए हम क्या करेंगे? हम एक while loop चलाएंगे while h is greater than 1, and हम अपनी primes array में देखेंगे to find the SPF. If h modulo I is 0, then you can reduce h to h by I, and you can do a count plus plus. Basically, you can increase your number of steps. Count is going to store my k1, and ultimately you will be printing the value val plus count, which is k1 plus k2, right? So that was the implementation. So I hope I'm clear with it. For further knowledge, if you want to, if you don't know sieve, so basically you can go through a video which will be explaining you sieve in more detail, and then you can come back and look up on this template. Okay, then you will get to know what I'm doing here. So let's see our next question.
So this will be a last question which we will be taking. ठीक है? So this question is chess coloring, and in this question you are given an n cross n chessboard where all squares are initially white. ठीक है? Now you have to determine the number of ways to color exactly n square by 2 squares black such that no two black squares share a side. Okay, and then you have to find number of ways, different number of ways of coloring them. Okay, so let me represent the black color as blue here. Okay, because I cannot like color it black on a black background. So we have a chessboard here. Okay, so initially all cells are colored white. Okay, okay, so let's suppose this is a 4 cross 4 chessboard. Now the thing is you have to color exactly n square by 2 cells black और ब्लू. ठीक है, तुमको इनको ब्लैक कलर करना है एग्जैक्टली n स्क्वायर बाय 2 सच दैट कि अगर तुम एक सेल को ब्लू कलर करते हो तो उसके आसपास की जो एडजेसेंट सेल्स हैं तुम उनको ब्लू नहीं कर सकते हो, है ना? तो तुमको किसको ब्लू करना पड़ेगा? तुमको इसको ब्लू करना पड़ेगा, या तुम इसको ब्लू कर सकते हो, या इसको कर सकते हो, या इसको कर सकते हो, बेसिकली डायगोनल सेल्स. अगर तुम इसको थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो इट इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड चेस बोर्ड जैसे तुम चेस में देखते हो. तो वही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है यहाँ पे फॉर कलरिंग देम, राइट? दिस इज बेसिकली, अगर तुम ग्राफ के बारे में जानते हो तुम इसको बाइपार्टाइटनेस से भी कंपेयर कर सकते हो कि दिस इज द बाइपार्टाइट नेचर ऑफ अ ग्राफ, ना? तो बेसिकली अगर तुमको इसको कलर करना होता तो एक ही तरीका है कि तुम ऑल्टरनेट कलरिंग करो, मतलब कि इसमें कॉलम वाइज ऑल्टरनेट एंड देन रो वाइज तुम इसको कलर ना करके इसको कलर करो, जैसे कि चेस में होता है, राइट? सॉरी, दिस इज नॉट 4 क्रॉस 4. अब ये 4 क्रॉस 4 होगा. 3 4, 1 2 3 4 5. ओके, इट वॉज 5 क्रॉस 5. सॉरी, इट वॉज नॉट 4 क्रॉस 4, इट वॉज 5 क्रॉस 5. ये 5 क्रॉस 5 था, ठीक है? 5 क्रॉस 5 इज बेसिकली ऑड क्रॉस ऑड, है ना? तो इस केस में तुमको ऑल्टरनेट कलरिंग करनी पड़ेगी. तो तुमने इनको कलर कर लिया, तुम फिर से इनको कलर कर लो. ऑल्दो हम जो चेस देखते हैं दैट इज 8 क्रॉस 8, 64 ब्लॉक्स होते हैं जिसमें कि 32 ब्लैक्स और 32 वाइट्स होते हैं, ना? क्योंकि वो इवन होता है. तो इस इवन के केस में तो तुमको, है ना, बट यहाँ पे ये ऑड नंबर है 5 क्रॉस 5, इसलिए तुमको थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है कि पहले यहाँ पे 3 ब्लैक्स थे, फिर यहाँ 2 ब्लैक थे, फिर अगेन 3 ब्लैक थे, अगेन फिर 2 ब्लैक्स होंगे, है ना? इस तरह की कलरिंग चलने वाली है. अब यहाँ पे हमको ये तो समझ आ रहा है कि इवन और ऑड के केस में अलग अलग कलरिंग होने वाली है. तो सबसे पहले इजियर केस को डिस्कस कर लेते हैं विच इज इवन. इवन मतलब कि जो तुम्हारा एन है वो इवन है बेसिकली. एन क्रॉस एन भी इवन होगा बिकॉज इवन इंटू इवन इज इवन, राइट? एन स्क्वायर भी इवन होगा. अगर हम एन क्रॉस एन की बात करते हैं जहाँ पे कि एन इवन है, लेट्स टेक एन एस 4. ठीक है, एन एस 4. अगर हम 4 क्रॉस 4 की अगर एक मैट्रिक्स ड्रॉ करें, राइट, लाइक दिस इज 4 क्रॉस 4. ठीक है, और हमको अगर कलरिंग करनी हो इसमें ऑल्टरनेटली, तो दो ऑप्शंस है यहाँ पे. या तो तुम इन दोनों ब्लॉक को पहले कलर करो. तो अगर तुम इन दोनों को कलर कर देते हो, है ना, तुमने एक चॉइस कर ली, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं बचती है. तुम मजबूर हो कि तुमको इसको और इसको कलर करना ही पड़ेगा.
सिमिलरली फिर तुम मजबूर हो कि तुम इसको और इसको कलर करना ही पड़ेगा। देन अगेन यू हैव दिस चॉइस। तो तुम्हारे पास चॉइस बस एक थी कि जो फर्स्ट रो थी, तुम उसको डिसाइड कर सकते थे कि किन दो सेल्स को तुमको कलर करना है। ऑल्टरनेटिवली तुम ऐसा भी कर सकते थे कि इन दोनों को कलर ना करके तुम इन दोनों को कलर करते हैं। ठीक है, एक दूसरी चॉइस ये हो सकती है, दिस वुड बी योर सेकंड चॉइस। बस यही दो चॉइसेस हैं, इसके बाद बाकी कलरिंग खुद हो जाएगी, राइट, बिकॉज ऑफ द पैटर्न। पैटर्न क्या है? पैटर्न इतना सा है ना कि तुम ऑल्टरनेट कलरिंग करो, और जैसे चेस बोर्ड में होती है ना, मतलब अगर इसको तुमने ब्लैक कर दिया है तो तुम इन इन और इन वाले सेल्स को ब्लैक नहीं कर सकते हो, तो तुमको ऑल्टरनेट कलर करना पड़ेगा ना, इसको कलर करना पड़ेगा और इसको कलर करना पड़ेगा, जैसे कि चेस में होता है, राइट। तो अगर तुम फर्स्ट रो का कलर चूज कर लेते हो तो यू आर कंपेल्ड फॉर चूजिंग द कलर ऑफ अदर रोज, दैट मीन्स यू ओनली हैव टू चॉइसेस है। या तो तुम ब्लू वाले मैनर में कलर करोगे या ग्रीन वाले मैनर में कलर करोगे ब्लैक्स को, है ना। एंड इन दिस सिनेरियो यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव एग्जैक्टली n स्क्वायर बाय 2 नंबर ऑफ ब्लैक्स, और कोई तरीका ही नहीं है n स्क्वायर बाय 2 नंबर ऑफ ब्लैक्स को हासिल करने का, राइट। तो दिस वाज द केस फॉर इवन। तो इवन में हमेशा आंसर 2 होगा। तो whenever n is even, then the number of ways of coloring black is always 2. Now if n is odd, okay, n odd, क्या होगा? अगर n odd है, odd into odd odd होता है, राइट। तो हम 3 क्रॉस 3 से देख लेते हैं इसको। odd into odd odd होता है, राइट, लाइक 3 into 3 is 9, राइट। अब तुम इसमें ये देखो, तो अब तुमको एग्जैक्टली n स्क्वायर बाय 2 फ्लोर, दैट इज 9 का, दैट इज इन दिस एग्जांपल इट इज 9 बाय 2 का फ्लोर विच इज 4। तो तुमको 4 सेल्स ब्लैक करने हैं एंड रिमेनिंग 5 सेल्स वाइट करने हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग है कि अगर मान लेता है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस तो यहाँ पे भी है, कि या तो तुम फर्स्ट और थर्ड सेल को तुम ब्लैक करो, तो अब तुम कंपेल्ड हो कि सेकंड रो और थर्ड रो में तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट कलरिंग के चलते तुमको इसको कलर करना पड़ेगा। अब है ना, और थर्ड रो में तुम क्या कर सकते हो कि तुमको 4 सेल्स ब्लैक करने थे, तुम ऑलरेडी 3 सेल्स ब्लैक कर सकते हो। या तो तुम इसको ब्लैक कर दो या इसको कर दो, दोनों चलेगा। मान लेते हैं मैं दोनों को कर देता हूँ अभी हाल फिलहाल। इट इज ऑल्दो हैविंग 5 ब्लैक्स, बट आई कैन अश्योर कि मैं 4 ब्लैक्स इसमें से बना सकता हूँ, है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लेते हैं कि मैंने जबरदस्ती 5 ब्लैक कलर कर दिए, ठीक है। और तो कोई पैटर्न नहीं हो सकता है 5 ब्लैक कलर करने का, है ना। अगर तुम ऐसा करते कि सिर्फ ऑल्टरनेटिवली इसको ब्लैक कलर करते, तो फिर तुम मजबूर हो जाते इसको ब्लैक और इसको ब्लैक करने में और इसको ब्लैक करने में। इस तरीके से तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही ब्लैक आए विच वर रिक्वायर्ड, है ना। तो दो ही कलरिंग के पैटर्न्स है, या तो ये ऑरेंज वाला है या तो ये ब्लू वाला। तो अगर तुम ब्लू वाले पैटर्न से चलोगे तो हमेशा तुम एग्जैक्टली n स्क्वायर बाय 2 के फ्लोर जितने ब्लैक्स हासिल कर लोगे, दैट इज रिक्वायर्ड विच इज 4। बट अगर तुम ऑरेंज पैटर्न से गए होते, राइट, तो तुमको एक एक्स्ट्रा कलर मिलेगा, मतलब कि एक एक्स्ट्रा ब्लैक मिलेगा। अगर तुम इस मैनर में कलर करो तो तुमको 5 ब्लैक्स मिले यहाँ पे। तुमको जरूरत तो एग्जैक्टली 4 की थी, तो तुम क्या कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम किसी भी एक ब्लैक को वाइट कर दो फिर से। मतलब कि या तो तुम इसको वाइट कर दो, या 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 इसको वाइट कर दो। तो वाइट करने की कितनी चॉइसेस हैं? वाइट करने की यहाँ पे 5 चॉइसेस हैं, राइट, जितने की नंबर ऑफ ब्लैक थे हमारे पास, राइट।
तो नंबर ऑफ ब्लैक्स कितने थे, जो कि 5 आ गया था, विच वॉज नथिंग बट n स्क्वायर बाय 2 का सील, राइट। या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, n स्क्वायर प्लस 1/2, है ना। n square plus 1/2 were the choices for having exactly n square by 2 plus floor these many number of blacks, है ना। एंड एक और चॉइस क्या थी कि तुम ब्लू वाले मैनर में कलर किए होते। अगर तुम ब्लू वाले मैनर में कलर करते तो तुमको बस एक ही चॉइस मिलती कि तुम्हारे पास एग्जैक्टली 4 ब्लैक्स आते, मतलब n स्क्वायर बाय 2 के फ्लोर जितने ही ब्लैक्स आते। तो अब तुम ब्लैक्स को घटा तो सकते नहीं हो, है ना। तो दैट सिंपली मीन्स कि चॉइस बस यही थी। एडिशनली एक चॉइस और आ जाती है यहाँ पे, +1, these many choices you have if n is odd। ठीक है, दिस इज द एनालिसिस कि जब n ऑड है तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाय 2 विच इज n स्क्वायर प्लस 3/2 बन जाता है, राइट। दिस इज द सिनेरियो व्हेन n इज ऑड। आई होप इट इज क्लियर व्हाई इट इज कमिंग लाइक दिस। बिकॉज तुम खुद सोचो ना कि जो n 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स थी उसको कलर करने के दो ही तरीके थे, है ना। या तो तुम ऐसे चले होते कि तुम पहले बीच वाला एलिमेंट कलर करते तो तुम कंपेल्ड थे इसको और इसको कलर करने में, सिमिलरली फिर इसको कलर करने में, राइट। इस केस में तो 4 ब्लैक्स मिल गए जो कि रिक्वायर्ड थे। बट वहीं पे अगर तुमने ये वाला पैटर्न चूज किया होता, ऑरेंज वाला, राइट। अगर तुम इसको कलर करते, इसको कलर करते, फिर इसको कलर करते, देन दिस एंड देन दिस, इन दिस सिनेरियो यू आर हैविंग 5 ब्लैक्स बट यू आर रिक्वायर्ड 4 ब्लैक्स। तो तुम क्या करो, किसी एक को अनकलर छोड़ दो, या फिर तुम इसको ऐसे सोचो कि कितनी पॉसिबिलिटीज है कि मैं किसी को वापस से अनकलर कर दूं। तो मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं इसको वाइट कर दूं, या इसको वाइट कर दूं, या इसको कर दूं, या इसको, या इसको। तो एग्जैक्टली उतनी ही पॉसिबिलिटीज है जितनी के ब्लैक्स बने थे। और ये कितने बने थे, n स्क्वायर बाय 2 का फ्लोर विच इज n स्क्वायर प्लस 1/2, राइट। सो और एडिशनली एक केस कौन सा आता है, ये वाला, जब यहाँ पे तुमने एग्जैक्टली 4 ब्लैक्स बनाए थे। That why that's why it is coming up into n square plus 3/2. So now the question is just think this thing that if n is even, you have only two choices, and if n is odd, then you have n square plus 3/2 choices, right? That is all for this question. Implementation is pretty simple. Let me show you my submission. Implementation is pretty simple, that you can just have your n is input and you have answer. And if n is odd, then answer is n square plus 3/2, else answer is 2. And you can simply print your answer. Okay. So that was all for this discussion. Okay. Thank you for watching this. I hope it was helpful for you. And do let me know if there are any other suggestions. Okay. So thank you.